So exercise 3.3, question number 1 and bit number 2. The question is 3x plus 4y equals to 10 and 2x minus 2y equals to 2. So we are solving this one by two methods. Elimination method first and then by substitution method. तो elimination method में हम क्या करना है, इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना. तो सेकेंड इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 2 से. सो 2x minus 2y equals to 2, उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4x minus 4y equals to 4. और इसको आप जो है ऐड करें 3x plus 4y equals to 10 से. 4 plus 4 minus 4y कट जाता. 3x plus 4x 7x है. 7x equals to 10 plus 4 14. x equals to 14 by 7. x equals to 2. सब्स्टिट्यूटिंग ये x की वैल्यू क्या करना है, आप सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो 2 into 2 minus 2y equals to 2. So we get 4 minus 2y equals to 2, or 2y equals to 4 minus 2, or y equals to 2 divided by 2, y equals to 1. Therefore x equals to 2 and y equals to 1 we got by elimination method. अब इसको क्या करना है, substitution method से करना है. From second equation we got 2x minus 2y equals to 2. So 2x equals to 2y plus 2. तो इसमें 2 कॉमन ले लें और इधर से जो 2 डिवाइड कर दें. 2 into y plus 1 divided by 2 is 2 कैंसिल हो जाता है. x equals to y plus 1 is थर्ड इक्वेशन. सब्स्टिट्यूट करें इसको फर्स्ट इक्वेशन में. तो 3x plus 4y equals to 1. x की यहाँ पे आप डालें y plus 1. तो 3y plus 3 equals to 3y plus 3 plus 4y equals to 10, और 7y plus 3 equals to 10, और 7y equals to 10 minus 3, 7y equals to 7, and y equals to 7 by 7, y equals to 1. y equals to 1 को आप क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो x equals to y plus 1, और x equals to 1 plus 1, x equals to 2. So x equals to 2 and y equals to 1. We got this one by substitution method also. So exercise 3.3, first question, third bit. 3x minus 5y minus 4 equals to 0 and 9x equals to 2y plus 1. अब इसको पहले हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं. सो इसमें क्या करेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी गेट 3 into 3x minus 5y minus 4 equals to 0, और दैट इज इक्वल्स टू 9x minus 2y minus 7 equals to 0. तो इसके ऊपर आप रखें सेकेंड इक्वेशन 9x minus 15y minus 12 equals to 0. 9 कट जाता है. सो वी गेट minus 13 minus 13y minus 5 equals to 0, or 13y equals to minus 5, y equals to minus 5 by 13. Substituting this value of y in first equation. So 3x minus 5 into minus 5 by 13 minus 4 equals to 0. So 3x plus 25 by 13 minus 4 equals to 0. 3x plus अब ये 13 एलसीएम लेंगे. 3x plus 25 minus 52 by 13 equals to 0. 3x minus 27 by 13 equals to 0, और 3x equals to 27 by 13, और x equals to 27 by 13 by 3 by 13 into 3. तो 3 और 27 करेगा, x equals to 9 by 13. So x equals to 9 by 13 and y equals to minus 5 by 13. ये क्या है, वैल्यूज़ है x और y के. हम एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व किए. अब हम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से. सो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है आपको, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास, उसमें सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 3. एक सेकेंड. तो इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको निकालना है, फ्रॉम 2 वी हैव गॉट 9x equals to 2y plus 7, x equals to 2y plus 7 by 9. That is the third equation. So substituting the value of x in first equation. So we get 3 into 2y plus 7 by 9 minus 5y minus 4 equals to 0, और 2y 3 और 9 कट जाता, तो we get 2y plus 7 by 3 minus 5y minus 4 equals to 0. So LCM 3 ले लें, तो we get 2y plus 7 minus 15y minus 12 equals to 0, और minus 13y minus 5 equals to 0, और y equals to minus 13 equals to 5, और y equals to minus 5 by 13. ये वैल्यू आ गई y की. अब ये y की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें, 3 में. सो वी गेट हियर x equals to 2y plus 7 by 9 था, तो y की जगह पे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे minus 5 by 13. 2 into minus 5 by 13 plus 7 by 9. So we get here x equals to minus 10 plus minus 10 by 13 plus 7. So 13 into 7 minus 10 plus 91 by 13 by whole divided by 9. So ये हो जाएगा 81 by 13 into 1 by 9. 9 कट जाता है, 9 by x equals to 9 by 13 and y equals to minus 5 by 13. So we got this one by substitution method also.
Hello students, so we are going to start the exercise 3.3, fourth bit. The equations are x by 2 plus 2y by 3 equals to minus 1 and x minus y by 3 equals to 3. So x by 2 plus 2y by 3 equals to minus 1. We can simplify this one by taking LCM. So we get 3x plus 4y equals to by 6 equals to minus 1, or 3x plus 4y equals to minus 6. Mark this as the first equation, and the second equation is x minus y by 3 equals to 3. तो इसको क्या करना है हमको, सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 3 से, सो दैट x और दोनों के इक्वेशन सेम हो जाएंगे, ठीक है. सो वी गेट 3x minus y equals to 9. So subtract from 3x plus 4y minus 6 equals to minus 6. We get 3x कट जाता है, plus 4y minus of y is plus y. So 5y equals to minus 15 and y equals to minus 15 by 5, y equals to minus 3. So substituting in first equation, that is x by 2 plus minus that is substituting in the second equation, x minus y by 3 equals to 3. So in place of y we are putting minus 3, x plus minus 3 by 3 equals to 3. So x plus 1 equals to 3, x equals to 3 minus 1, x equals to 2. So x equals to 2 and y equals to minus 3. That is the answer by elimination method. Now we solve this one by substitution method. So again the first equation is x equals to y by 3 plus 3. From this second equation we are having x minus y by 3 equals to 3. We substitute, we take x outside, so and we take minus y by 3 to the other side, and we get x equals to y by 3 plus 3. So this we will mark it as the third equation. So substituting this value of x in first equation, that is y by 3 plus 3, x by 2 plus 2y by 3 equals to minus 1. So in place of x we write y by 3 plus 3, y by 3 plus 3 by 2 plus 2y by 3 equals to minus 1. So we get y plus 9 by 3 into 1 by 2 plus 2y by 3 equals to minus 1. Y plus 9 plus 4y by 6 equals to minus 1, or 5y plus 9 equals to minus 6. 5y equals to minus 6 minus 9, or 5y equals to minus 15. Y equals to minus 15 by 5, y equals to minus 3. So substituting this value of y in third equation. So x equals to y by 3 plus 3. So in place of y we can write minus 3. So x equals to minus 3 by 3 plus 3. Minus 3 by 3 is minus 1. X equals to minus 1 plus 3 is x equal to 2. So x equals to 2 and y equals to minus 3. This is the solved by method of substitution.